Good evening to all of you. Is this audible, visible, all clear? All clear? Okay, good. कौन पढ़ुଥିଲେ last class? Last class रे कौन पढ़ुଥିଲେ हम? What was the topic of discussion in last class? Pranam, Sangram, Soumya. Very good evening, Jyotishree. कौन थिला मन नहीं? Last class कौन देखुଥିଲେ? आज गोटे बहुत भल टॉपिक देखिए हमें एनवायरमेंटल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट. एनवायरमेंटल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट आउ सेटा क्वेश्चन करेबी. ना मते को तो डेवलपमेंट रा कथा में देखुଥିଲେ बा ग्रोथ पढुଥିଲେ मोर ग्रोथ मीन्स मोर जीडीपी. कौन कहले मोर ग्रोथ रो अर्थ कौन? मोर ग्रोथ मीन्स मोर जीडीपी नहीं कि मोर द जीडीपी मोर द प्रोडक्शन. मोर द जीडीपी मोर द प्रोडक्शन. मोर द प्रोडक्शन यदि प्रोडक्शन अधिक हुए मोर द जीडीपी मोर इज द प्रोडक्शन एंड मोर द प्रोडक्शन यदि प्रोडक्शन अधिक हुए ताले इंपैक्ट ऑन एनवायरनमेंट कमी जीवो ना बढ़ी जीवो? इंपैक्ट ऑन एनवायरनमेंट मु अनेक गुड एग्जांपल दे परिबे यार. गंगा रिवर ऊपर अनेक गुड रिसर्च आसिलानी. बस रिसर्च कहूची कि ह्यूमन एक्सक्रीटा रो वैल्यू बा क्वांटिटी कंसंट्रेशन इन गंगा वाटर इज इंक्रीजिंग. कुंभ मेला समय सेम जिन देखा मिलला जो 95% इज इंक्रीज जोटा एक रहा कथा सेटा रहउची केते 195 बुझी नो एक्सक्रीटा रो वैल्यू केते अधिक बढ़ी बढ़ी जाउची इन द गंगा रिवर गंगा वाटर. दिस इज बिकॉज ऑफ कौन पाइना? दिस इज बिकॉज ऑफ मोर पॉपुलेशन. एवं डे टू डे बेसिस रे जदी देखिए पॉल्यूशन फैक्टर एते अधिक इंक्रीज काहे कि होची डे टू डे बेसिस रे मेट्रिक टन क्वांटिटी रो कलकारखाना जो एक्सक्रीटा गुडा आसुची कलकारखाना जो पॉल्यूटेड वाटर आसुची से गुडा सब मिसुची डिस्चार्ज इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज पॉल्यूटेड वेरी सीवियरली पॉल्यूटेड इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज मिसुची गंगा जल. चला so impact on environment बढ़ुची. so जब देखिए डेवलपमेंट तो होची but this development is called unsustainable development. This development is called unsustainable. This development is called unsustainable development. है
संग्राम को 2026 रे मु +3 कॉलेज जीवी कोन मु बैच परचेस करि परिबि नले मो प्रिपरेशन ग्रेजुएशन करि परिबि ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर रू करि परिबि प्रिपरेशन ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स प्रिपरेशन करि परिबि ना को कौन कहला दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट किए सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा कहते ना कीपिंग एन आई ऑन द एनवायरनमेंट keeping an eye on the environment keeping an eye on the environment this is called what this is called sustainable development कौन को जाको नाको को जामे सस्टेनेबल डेवलपमेंट बुझिला सस्टेनेबल डेवलपमेंट कौन so environment sustainable development is simply environment friendly development this is simply environment friendly this is simply कौन कहले environment friendly development ताको हम sustainable development clear what is sustainable development बुझिला कि नहीं what is now see this is the meaning of sustainable this is the definition of sustainable development देखो समझते करता definition of sustainable development ताले कौन को सस्टेनेबल डेवलपमेंट रो डेफिनेशन which meets the needs of present without compromising ability of the future generation एबे डेवलपमेंट हबो without compromising the ability of the future generation ability को compromise न करी कौन कहली without compromising need of the future generation no राइट्स को प्रोटेक्ट करवा सहित जो डेवलपमेंट हम कहते सस्टेनेबल डेवलपमेंट सो ये देला कौन डेफिनेशन कौन देला डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग और ग्रोथ और प्रोग्रेस सस्टेनेबल डेवलपमेंट कौन ना डेवलपमेंट व्हिच मीट्स नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट began to get wide acceptance in late 1980s गोटे एटी सब क्वेश्चन आसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट रो कथा प्रथम कोड आसिला ना गोटे रिपोर्ट आसिला जा नाउ ब्रूटलैंड रिपोर्ट सो एटी आसिला अर्जेंसी ऑफ रीथिंकिंग आवर वेज ऑफ लिविंग एंड गवर्निंग तो रेस्पॉन्सिबली मीटिंग ह्यूमैनिटीज गोल्स एंड एस्पिरेशंस कौन रेस्पॉन्सिबली मीटिंग ह्यूमैनिटीज गोल्स एंड एस्पिरेशंस ब्रूटलैंड रिपोर्ट आनला तो ब्रूटलैंड रिपोर्ट मन रखिबे so there is a development world commission on environment and development it draws the world's attention to the accelerating deterioration of human environment now human environment जो deteriorate करूची human development कारण रू कौन नेगेटिव इंपैक्ट पड़ुची मते को एनवायरनमेंट ऊपर संग्राम बैच सजेस्ट ना यू गो फॉर प्रीकॉम मेंस बैच बेसिक बैच जोड़ा सर्व सक्षम से बैच जाओ से बैच ले सब पढ़ा जाओ बेसिक्स रू पढ़ा जाओ
आरआई एग्जाम कथा मु कहि परिबि नो नॉलेज ऑन आरआई एग्जाम आसवा कथा सब परीक्षा रे गोटे दिटा आसपारे क्वेश्चन कहि हो सो यूएन जनरल असेंबली दीटा इंपोर्टेंट आइडिया ऊपर काम कला गोटे कोन ना वेलबीइंग ऑफ एनवायरनमेंट ऑफ इकोनॉमीज of people is ये दीटा जा कहला well-being of environment and well-being of economy or well-being of people, they are very much connected to each other. So sustainable development involves cooperation on a global scale. कौन कहला sustainable development ପାଇଁ cooperation दरकार केमती cooperation ना cooperation in a global scale is required. कौन कहू ना cooperation in global scale is required. Sustainable development is about integration. એટલે અમે આસવા ડાયરેક્ટલી ଏବେ ଆସିବା SDG को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ଏଠୁ क्वेश्चन कोन आसे मु आछि डायरेक्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स केतेटा गोल्स ना 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर देयर 17 SDG divided into 169 targets divided into 169 targets 17 टा गोल divided into केते ना 169 targets खाली कोन कहला कौन कौन 17 SDG व्हाट आर द 17 SDGs ना नो पॉवर्टी कौन कहू ना नो पॉवर्टी एंड पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म एवरीवेयर कौन कहू ना टू एंड पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म्स एवरीवेयर पॉवर्टी को एंड कर ना नो पॉवर्टी पई किछि स्कीम अछि इंडिया रे नमस्कार मितांजलि ना पॉवर्टी एंड करिया पई कौन कौन स्कीम अछि इन इंडिया व्हाट आर द स्कीम्स इन इंडिया टू एंड पॉवर्टी बहुत अंत्योदय अन्न योजना ना मनरेगा थिला मनरेगा इज नाउ चेंज टू करंट अफेयर पढ़ते समस्त मनरेगा चेंज ना कौन इज जीरो हंगर एंड हंगर एवरीवेयर बिकॉज नथिंग इज मोर पेनफुल देन पॉवर्टी बिकॉज नथिंग इज मोर पेनफुल देन पॉवर्टी तो ये कौन करछना ये अचीव करछ फूड सिक्योरिटी इंप्रूव्स न्यूट्रिशन प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जीरो हंगर रे हम कौन करि परिबा जीरो हंगर मींस नाउ इंडिया रे मते गोटे पॉइंट को बा गोटे रीजन को जो हंगर अधिक मु भी केपीके रीजन माल न्यूट्रिशन हंगर एटी अधिक कि नहीं ओडिसा रे मु कहबी नगड़ा नगड़ाटा कोठी जाजपुर जिला जाजपुर डिस्ट्रिक्ट एटिला नगड़ा so zero hunger end hunger achieve food security everywhere improve nutrition by you have different schemes like mamata scheme और scheme अछि कोन ना mamata scheme promote sustainable agriculture कोन करू ना it will promote sustainable agriculture अंतदय अन्न योजना भी हे परियो कोन कहू ना to promote sustainable agriculture good health and well being ensure healthy lives and promote well-being for all. It will ensure healthy lives and promote well-being for all. Healthy lives, well-being for everyone. Now, quality education, it will ensure inclusive, equitable, quality education for all. It will promote lifelong learning opportunity. कौन करियो ये कुछ for quality education for everyone. Gender equality, SDG number 5. अच्छा क्वालिटी एजुकेशन रिलेटेड किसी स्कीम रो ना कहलो सर्व शिक्षा अभियान क्वालिटी एजुकेशन रिलेटेड किसी स्कीम रो ना को सर्व शिक्षा अभियान बहुत स्कीम अछि जेंडर इक्वालिटी पई व्हाट आर द स्कीम्स फॉर जेंडर इक्वालिटी What are the schemes for gender equality? कौन स्कीम अछि जेंडर इक्वालिटी पई जेंडर इक्वालिटी रे कौन देखा ना जेंडर
neutrality or empower all women and girls. कौन कहते हैं empower, to empower all women and girls. Clean water and sanitation, ensure availability and sustainable management of water and sanitation. Clean water and sanitation, clean water for everyone, simple. Okay, SDG 7 is affordable and clean energy, ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all. कौन कहूँ affordable, sustainable, reliable and modern energy for all. Affordable and clean energy. Decent work and economic growth, it promotes sustainable inclusive growth. Inclusive growth रो meaning कौन? ये direct statement based question पचारुचे भाई. कौन पचारुचे ना statement based question आसुच्छो. Statement based question ने कौन पचारुचे? Now what is the meaning of inclusive growth? What is sustainable growth? What is sustainable growth? ये वाला question पचारुचे. Then industry, innovation and infrastructure. Triple I, industry, innovation and infrastructure. ये तीनटा को protect करिया को because to build resilient infrastructure, promote inclusiveness. कौन कहूँ to promote inclusiveness, include everyone. Industrialization, sustainable industrialization, industry बढ़ू but without having negative impact on the environment. Sustainable industrialization माने कौन? Without negative impact on environment. है build resilient infrastructure, promote inclusive sustainable industrialization, sustainable for long term industrialization, long term having zero impact, long term with zero impact. Reduced inequality. Now reduce inequality within and among countries. Now यार अर्थ कौन? Reduced inequality within and among countries. Very good evening, Bhavita. You joined late. Inequality reduce करिवो within and among countries रो अर्थ कौन? मुझे इंडिया भितरे within India regional disparity अच्छी कि नहीं? Let's talk about Western India and Northeastern India. Northeastern और Western versus Northeastern. बा मु कहिबी केरला versus Bihar in literacy rate. बा बीमारू states किए? बीमारू state रे बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश. बा मु कहिबी एपटे गोटे in one side तमिलनाडु, महाराष्ट्र, in another side छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बेंगल. Now industry गुडा एटी ग्रो करछन बेटर ग्रोथ. ई जगह कोन होत देयर इज बेटर ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री. कोन होत बेटर ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री. बुझले बीमारू स्टेट मन नै लागी नहीं. व्हाट इज बीमारू स्टेट? बीमारू स्टेट बुझेला. तमिलनाडु, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड यार एग्जांपल बुझेला. ताले रीजनल डिस्पैरिटी एग्जिस्ट इन इंडिया और नॉट? Regional disparity exist in India or not? Yes. है regional disparity to exist. Okay. এটা reduce करिया को regional disparity and among countries. Among countries रे मु example नेबी USA in one side, USA और UK versus India. बा मु कभी India in one side versus Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka in another side. देखो एटी disparity exist करछिना ना? Yes, disparity exist.
एटी कौन एटी डिस्पैरिटी एक्जिस्ट करछि सो जेहेतु डिस्पैरिटी एक्जिस्ट करछि ये डिस्पैरिटी को रिड्यूस करिया कहूछि reduced inequality within and among countries पूछेला SDG number 10 sustainable industrialization पूछेला SDG number 9 sustainable inequality पूछेला कि नहीं SDG number 9 ना डाउट रहला जति कह any doubt SDG 10 SDG 11 को आसीबा 11 कोन कहूछि 11 को sustainable cities and communities ना cities मानकर प्रॉब्लम कोन जदि मु इंडियन सिटीज कहबी इंडियन सिटीज रे प्रॉब्लम कोन हमकु देखिया कोनछे सबटु इंपोर्टेंट प्रॉब्लम होउछि वाटर स्कार्सिटी कोड देखिया कोनछि को वाटर स्कार्सिटी कोडी ना बेंगलुरु हैदराबाद दिल्ली सबुठ देखिया मिलानी वाटर स्कार्सिटी अर्बन फ्लड कोड देखिया ना मुंबई हैला so different type of environmental issues देखिया को चाहूं different cities different environmental issues sustainable cities sustainable communities हमको दरकार inclusive communities sustainable cities and communities required किछि एग्जांपल कहि परिबे सस्टेनेबल सिटीज रे हृदय बोली गोटे स्कीम आस्तिला अमृत स्मार्ट सिटी मिशन स्मार्ट सिटी का कहते व्हाट इज अ स्मार्ट सिटी कि कहबे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ स्मार्ट सिटी व्हाट इज अ स्मार्ट सिटी रो डेफिनेशन की कहबे को एस्पेक्ट थिले ताको हम स्मार्ट सिटी बोली कहूचे कौन कहले को एस्पेक्ट रहिले हमें ताको स्मार्ट सिटी बोली कहूते को you join late no problem so हमें पढ़ते स्मार्ट सिटी ना स्मार्ट सिटी कहा कहते व्हाट इज कॉल्ड अ स्मार्ट सिटी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ स्मार्ट सिटी फटाफट को road sanitation proper drainage आउ most important is infrastructure transportation and communication लेखिक रख यदि मन नहीं स्मार्ट सिटी रे कोन होते इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन हां कि नहीं जोड़ा सब रहिले स्मार्ट सिटी बोलते कहते ना कल्चरल एस्पेक्ट भी देखा जाउची स्मार्ट सिटी रे कल्चरल टाई अप कोन होचे कल्चरल टाई अप responsible consumption and production sustainable consumption means keeping an eye on the future generation keeping an eye on future generation तो कहला means sustainable consumption and production pattern without negatively affecting without affecting the environment simple without affecting the environment
एनवायरनमेंट ऊपर इंपैक्ट न पकई देन क्लाइमेट एक्शन एसडीजी नंबर 13 ये कौन कहूँ ना टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इंपैक्ट कौन कहूँ ना टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इंपैक्ट बुझे क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस करिवो एवं तार इंपैक्ट को रिड्यूस लाइफ बिलो वाटर एंड ऑन लैंड सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशियन सी मराइन रिसोर्स कौन बोले सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशियन सी मराइन रिसोर्स तार सस्टेनेबल यूज करिया लाइफ ऑन लैंड रे देखो कोन इट प्रोटेक्ट्स रिस्टोर्स एंड प्रमोट्स सस्टेनेबल यूज ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम फॉरेस्ट बायोडायवर्सिटी ये सब को प्रोटेक्ट करियो का प्रोटेक्ट करियो ना टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम फॉरेस्ट बायोडायवर्सिटी हैला ताको प्रोटेक्ट करियो पीस जस्टिस स्ट्रांग इंस्टीट्यूशंस पीस जस्टिस एंड स्ट्रांग इंस्टीट्यूशंस so it promotes peaceful and inclusive societies access to justice provide करियो इन 17 नंबर पार्टनरशिप फॉर गोल्स जते गोटे गोल पढ़िलेनी ये सब गोल को अचीव करिया पई कोन दरकार ना टू अचीव ऑल दिस गोल्स पार्टनरशिप इज रिक्वायर्ड कोन दरकार टू अचीव ऑल दिस गोल्स पार्टनरशिप इज रिक्वायर्ड बुझिला सो एटी पार्टनरशिप रा आवश्यकता अछि टू अचीव ऑल दिस गोल्स 17 टा कोइला हम एसडीजी 17 क्लियर एसडीजी 17 कोन नो डाउट तापर पॉइंट को आसी व्हाट आर द चैलेंजेस इन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट व्हाट आर द चैलेंजेस इन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहीं के अचीव करी होनी व्हाट आर द हिंड्रेंस और चैलेंजेस इन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहीं के हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करी परने को रीजन मानक पाए फॉर व्हाट रीजन फर्स्ट इज क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज ता पाए सो राइजिंग सी लेवल्स क्लाइमेट चेंज होची कि नहीं ग्लोबल वार्मिंग होची कि नहीं बिकॉज ऑफ टेम्परेचर इंक्रीजिंग टेम्परेचर लो कार्बन इकोनॉमी achieve we have to achieve low carbon economy economic growth hobo but carbon reduction to be reduced we have to reduce carbon reduction then poverty and inequality now poverty inequality pai kon hochi they are deeply interlinked sustainability सहित economic growth alone cannot solve these issues so inclusiveness रहिबा दरकार inclusiveness रे हम कोन देखुचे inclusiveness माने inclusion among all inclusiveness माने inclusion among all inclusion with all the sections of society so देखिए हमें डेवलपमेंट जो डेवलपमेंट होची डेवलपमेंट रो फ्रूट ता सब पोरेस्ट among poor among the poorest सब पोरेस्ट पाखरे पहुंचवा दरकार मोस्ट वल्नरेबल पॉपुलेशन पाखरे एटा पहुंचवा दरकार का पाखरे कहले एटा पोरेस्ट एवं वल्नरेबल पॉपुलेशन पाखरे पहुंचवा दरकार ये अनसस्टेनेबल करेक्ट अनसस्टेनेबल कंजप्शन जोटा हम ओवर कंजप्शन दरकार नहीं बट स्टिल कंजप्शन इज गोइंग ऑन अनसस्टेनेबल सेटा कहले हमें इट इज कॉल्ड अनसस्टेनेबल कंजप्शन दिस इज कॉल्ड एज अनसस्टेनेबल कंजप्शन then population growth very high population growth very high population growth so population in certain regions it increase pressure on resources such as land water energy यहाँ पर impact पहुंचे resource depletion there is resource depletion unsustainable extraction of non renewable resources unsustainable use of
रिन्यूएबल रिसोर्सेस बुझिला ताले केमिति कोन करी के हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंश्योर करि परिबा हाउ कैन वी एंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट हाउ कैन वी एंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ना फॉर रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन केमिति ना भाई रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन बुझिला केमिति कहना भाई रिन्यूएबल एनर्जी हमें डिफरेंट कंट्रीज लाइक डेनमार्क जर्मनी दे आर डूइंग गुड इन रिन्यूएबल एनर्जी India also invests heavily on solar energy through International Solar Alliance. International Solar Alliance. Since sustainable agriculture. Now, sustainable agriculture means agriculture practice with zero impact on the environment. Like organic farming, agroforestry, zero budget natural farming, ये सब करि परिबा ग्रीन सिटीज एंड स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कौन करि परिबा ग्रीन सिटीज एंड स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तो ग्रीन सिटी कौन with development of the ecosystem or the biodiversity conservation सहित कौन कहली with biodiversity conservation सेटा कहते green cities and smart infrastructure. And there are different cities like Singapore, Copenhagen, they have implemented policies for green transportation, energy efficiency, sustainable urban planning. Yeah. Then I would point like green finance. Green finance रो अर्थ green finance रो अर्थ कौन ना any structured financial activity like investment, lending, insurance, which is created to ensure better environmental outcome. It supports environmental sustainability, climate action, resource conservation. ये सब कहले कोथना green finance like green bond हेगला, wastage management, green loan. Green loan माने कौन ना loan कोकडी ना जोड़ा सब पॉजिटिव एनवायरमेंटल इंपैक्ट अछि जो इंडस्ट्री धर मन कर ईवी व्हीकल्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आसिला इलेक्ट्रिक व्हीकल को ग्रीन लोन्स मिल पारियो तो क्लीन ट्रांसपोर्टेशन वेस्ट मैनेजमेंट पई हेगला क्लीन ट्रांसपोर्टेशन वेस्ट मैनेजमेंट ये सब जगह रे मिलिबो ग्रीन लोन्स बुझियला कि नहीं सो फेवरेबल जोड़ा का एनवायरनमेंट फेवरेबल कोड यूज करते ना जोड़ा का एनवायरनमेंट फेवरेबल loan for installing solar panel, energy efficient appliances गुडा को पई आनियो ग्रीन इन्वेस्टमेंट फंड इटा कौन कहते ग्रीन इन्वेस्टमेंट फंड also this is called sustainable fund or eco funds so eta कोडी लागियो ना environmental social governance पई ESG criteria जोटी फुलफिल हो से लागियो like renewable energy water conservation हेगला pollution control carbon emission no development जते करियर अछि कर but without negative impact on the environment ऊपर impact न पकई कोन कहली environment ऊपर impact न पकई then carbon market and carbon credit एठी कोन हुए ना कार्बन क्रेडिट हुए केति की कार्बन जने एमिट करि परियो ताटो अधिक कार्बन एमिट करि परियो नाही कोन कहली केते कार्बन एमिट करि परियो ताटो अधिक कार्बन एमिट करि परियो सेटा असला कोन ना कार्बन मार्केट वा कार्बन क्रेडिट रे सो कार्बन क्रेडिट कोड यूज होत ना रिफॉरेस्टेशन रिन्यूएबल एनर्जी इट्स कार्बन क्रेडिट को यूज करा दे परियो ना ये गला एनवायरमेंटल इंपैक्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बा ग्रोथ ऊपर किछि पॉइंट आमे डिस्कस कले एबे केतना छोट छोट क्वेश्चन दोछि स्मॉल क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस कहियो मत जहां मु पढै छी ए क्लास मान करे ए जो इवनिंग क्लास हम करूचे सेतिरे जो टॉपिक पढै छे सेही टॉपिक रो क्वेश्चन दोछि
What is known as study of individual units? Study of individual units is known as study of individual units is known as macro. See, individual, sorry, microeconomics. B is the correct answer. Microeconomics. What is the main cause of all economic problem? What is the main cause of all economic problem? जल्दी को scarcity, very good point. Study of aggregates is known as study of aggregates is known as study of aggregate is called macro. Great Depression के पहला, when did the Great Depression occur? When did the Great Depression occur? And in 2930. Who is the father of modern macroeconomics? Father of modern macroeconomics? Almost सब चैप्टर में पढ़ी सारे इकोनॉमिक्स रो एबे कौन पढ़िया नेक्स्ट क्लास मान ग्रुप almost all chapters we have discussed.
आ को चैप्टर बाकी रहितला हमर आ को चैप्टर बाकी रहिला सेटा केनिज ना एटा कोन आदम स्मिथ नो एटा केनिज ना आदम स्मिथ इज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स मॉडर्न मैक्रो हो गले जेम केनिज और देखिबा मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज एटा कहला ना नेट पई तो यूजफुल हो नो प्रॉब्लम नेट पई यूजीसी नेट पई 100% यूजफुल यूजीसी नेट पई 100% यूजफुल एटा कोन हो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द इकोनॉमी कोन हो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द इकोनॉमी the branch of economic theory that deals with problem of allocation of resource branch of economic theory that deals with the problem of allocation of resource is called micro okay चलो बुझी गला आज जहाँ पढ़िले आमे नहीं डाउट अछि आउ एमती अनेक क्वेश्चन अछि आमे करबा नेक्स्ट क्लास रु देखिबा आउ किछि क्वेश्चन ताले कोन पढ़िले आमे आजिरो क्लास रे कोन पढ़िले आजिरो क्लास सस्टेनेबल डेवलपमेंट एति की पढ़ी के आसा आउ जहाँ से देखिबा नेक्स्ट क्लास एति की समस्त पढ़ी के आसंदो आउ जहाँ से देखिबा नेक्स्ट क्लास ठीक अछि ऑलराइट दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन थैंक यू गुड नाइट नो प्रॉब्लम लेट आसला जदि कि देखि दबो रिकॉर्डिंग अवेलेबल अछि देख पारि नो प्रॉब्लम प्लीज वॉच रिकॉर्डिंग जो वन लेट आसले रिकॉर्डिंग देखि देबे जे लेट आसले थैंक यू गुड नाइट पढ़ी के आसीबे समस्ते बुझी होची तो किसी असुविधा नहीं कहना मते बुझी होची ना बुझी होनी जति के हम डिस्कशन करू no easy economics easy हमें ताको इजीली डिस्कस करछे आउरी आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू मेक इकोनॉमिक्स इजी फॉर यू ता सहित प्रैक्टिस करछे एवरी कांसेप्ट वी हैव डिस्कस्ड रिवीजन होउची री रिवीजन होउची बारंबार पढुचे सेम जिंस ता ऑब्जेक्टिव होउची इजी करिया पाठटा को माने मन रहि जीवो जेमति हमर संपूर्ण सेही वे रे हमें पढुचे मते लागुनी काहा कष्ट लागुथियो बोली तो बट या परे क्लास परे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होची प्रैक्टिस करबा और नोट्स मेकिंग और निजे नोट्स बनाओ जहाँ पढुचे तार प्रैक्टिस करो एमसीक्यू सॉल्व करो
Please read newspapers. Newspaper पढ़ंतु daily basis रे either the Hindu or the New Indian Express. Answer writing करंतु मेंस ପାଇଁ optional पढ़ंतु एई भलिया पढ़िले you will qualify. This is how you have to study. नचेत खाली ऊपर ऊपर पढ़िले हापाजाली किछि हबन. हो ठीक अछि एतिक पढ़ी के आसा जा देखियो नेक्स्ट. थैंक यू. गुड नाइट.